Hello students, our today's topic is assets acquisition with automatic offsetting entry with multiple assets. पहले हम चेक कर लेते हैं AW01N AW01N। तो हमने एक्विजिशन दिखाया था विदाउट वेंडर, जिसकी एंट्री हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपकी एसेट्स मेंटेन करो, एक्विजिशन विद वैल्यू चेक कर लो, पोस्टेड वैल्यू में भी आपको आपकी पोस्टिंग दिखेगी। कंपैरिजन में जाओगे तो कंपैरिजन में देखो आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिख रहा है। पैरामीटर में हमने यूज़ किया था डेप्रिसिएशन की विथ 100%, तो यहाँ पर आपका 100% एक्विजिशन 100% डेप्रिसिएशन शो कर रहा है। ओके, तो सेम हम जाते हैं अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिक्स एसेट्स, posting, acquisition, external acquisition, and ABZON, that's acquisition with automatic offsetting entry without vendor। तो यहाँ पे हम देखो मल्टीपल एसेट्स के साथ हमारी एंट्री पोस्ट कर सकते हैं। ओके, तो जस्ट एंटर योर डॉक्यूमेंट डेट। हम लोग एंटर करते हैं 10 अप्रैल 2025। पोस्टिंग डेट हमारा डेप्रिसिएशन डेट डिफाइन करेगा, तो उसको हम दे देते हैं 15 जनवरी 2025, and our asset value date is 18th Jan 2025। Just press enter and click on multiple assets। तो यहाँ पर हम multiple assets डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले डिफाइन करते हैं $4000 रेंज ओवर, then second one 40001, Ford Focus, then third one is Audi, okay, then BMW, next one is scanner, next one microwave। just enter document date, that is 10th April 2025, Jan 2025, posting date 15th Jan 2025। Select Astra, then press scanner
and then microwave. Now just enter price, that is 50, 100 euro, 15,000, 22,000, BMW 22,000, Astra 15,000, Audi 40,000, Ford Focus 20,000, now add a new assets again. iPad's cost 400, then laptop €800, नेक्स्ट हम ऐड कर सकते हैं मिशनरी फोक फिल्टर, that's 50,000. Next one is access platform, 60,000. Now add another asset, digger, which amount is 70,000. Next, office desktop, office desk 1,000. Then office next we will add chairs for 100 euro, and then we will add the next one is 30,000, and this is Apple computer. It will be next one is computer, okay, and cost and 2,000. That's it. Now we will add another assets. Dell laptop for 700 euro. Just press enter. Now just click on additional details. यहाँ पर आप एडिशनल डिटेल्स जो इंटर करना चाहते हैं कर सकते हैं, कुछ नोट ऐड करनी है तो वो भी कर सकते हैं. जस्ट क्लिक ऑन सिमुलेट.
Okay, just enter posting amount here 1000 and simulate it. तो यहाँ पर हमारे सारे पोस्टिंग्स एडिट करते हैं. You can check the line items also. If you want to add the additional account assignment, you can add the additional account assignment and just go to you can check the currency also and by principal also. Change amount 2000 and then click on post. Go to transaction. चेक कर लेते हैं हमारी एंट्री पोस्ट हुई है नहीं. AW01N Asset Explorer. Okay, just change the asset. एंड चेक. यहाँ पर हमारी एंट्री पोस्ट हो चुकी है. So here we can check the multiple assets document. Just come back.